गुड इवनिंग एंड वेलकम टू चिट मसाला। मैं हूँ परम शिवन और साथ साथ में हेलो वेलकम अनुराधा जी। अनुराधा जी पहली बार इस नाम को हम देख रहे हैं भाई। इसे अनुदास नहीं, अनुदास है ना। फोटो तो ऐसे देखा तो नहीं, फोटो दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है। तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस इवनिंग्स फीड। मैं हूँ परम शिवन और शेयर करते हैं ये फीड। भाई साहब कैसे हैं आप? भाई कैसे हैं आप? कैसे परम क्या हुआ? आवाज भी क्या हुई? नहीं, थोड़ी ट्रेनिंग कर रहा था, फिल्म के रोल मिला था तो ट्रेनिंग करी बोला ना। अच्छा, तो बोले अच्छा, इसमें डीप वॉइस का उत्पादन और साथ साथ में उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी बात है। तो आइए सिडनी शहर की फिजाओं में एपिसोड नंबर 51 माय फ्रेंड। 51 होगी ना? Is that your age? Yes, a little bit less. अच्छा सुनो, कैसे लगे हमारा वॉइस? Does it sound husky or does it sound SEXXXXX? My friend, you can be honest. अगर लड़की होती, अगर आप फीमेल होती तो क्या करती? ना शाम की इस बेला में चलते हैं और उधर नसोरी में बैठे हुए प्रणव भाई आपको याद कर लेते। कैसे हैं आप सब? राइट हैं? ये आवाज अच्छा लगी। राइट हैं आप लोग सब? I mean, I hear some of the announcers, you know, देखो शाम की बेला में हम चलते हैं और उधर रसोई में बैठे हुए हैं और सब और करते हुए। बात ऐसे बहुत जल्दी लगा फीजी में। हम लोग का टाइम भी रहा है कमर्शियल स्टेशंस में ऐसे हुए ज्यादातर कि they talk very very fast. I don't know why. I don't think they'd be running short of time all the time. Yep. But Okay, it happens with the commercial radio, but with the national broadcasting, it doesn't happen. थोड़ा जोश में आ जाए लड़का जोश में आ जाए, म्यूजिक के जोश में आ जाए, but then it depends on the target audience that they have. अच्छा, हम जल्दी से आप जरा कुछ टिप्पणी करते रहो, हम थोड़ा सा शेयर करते हैं इस वीडियो को। तो जितने भी लोग हमारे साथ में शामिल हो गए अभी भी खास स्वागत और अभिनंदन आपको हम कर रहे हैं। और आज एपिसोड 51 में एक बार फिर से मैं प्रणोल राय आपके साथ में साथी परम। एंड परम has just returned from a Fiji trip. उसके बारे में हम पूछेंगे जरूर। आए कि फिर क्या हुआ? He fell sick, so that's why we didn't have our last episode. So of course testing time. अनुराधा ने कहा testing time. How well you know your viewers regardless of the name. यार प्रवीण भैया ताल मारी से तुम्हें ब्रदर। That's a good one अनु। Testing time इन्होंने लिखा है how well you know your viewers regardless of the name. इसकी मतलब भी देखी से छुपे से। भैया तो और प्रवीण भैया भी इसमें हेलो बोले नहीं सके तरह में मैसेज करके बता दे कि तुम लाइव है बैड शेड बैड चेस्ट। ओह अच्छा परम क्या हुआ? मेरे ख्याल से कुछ हुआ है। I came home, you know, it's quite warm in Sydney at the moment, so I came home and usually जब घर पे आते तो it's like if it's hot, so you don't need your t-shirt on, ना? It's a lesson learnt though, and whenever you got a camera, प्रवीण हंसे देखो हाँ करे, but तुम enjoy करा, that's fine. जाने brother. Well, I had my shorts on, but I was bare chested, right? हम निकाल दी कपड़ा. So I was bare chested and I was organizing the show. I was actually getting into the mood of पता नहीं कैसे बटन दबा कैसे कौन सी हुई के. Normally you have to press the go live button ना, तो I just don't know how. It went live and then people were enjoying it. वहाँ से कोई मैसेज भी नहीं करे, वहीं में कमेंट करे और हम यहाँ बिजी है प्रोग्राम तैयार करे में। प्रवीण प्रसाद ने लिखा दुद्दू देखा। अच्छा दुद्दू हमारा दुद्दू नहीं है ब्रो। I don't have the दुद्दू। सिक्स पैक्स परम दिखा, उठा दो। मसल है ब्रो, दुद्दू हो ही नहीं सके। चटवा उठा दो। I've got a nice chest, so गर्व है उस पे। That so says परम, so says परम। I have to say that I've got a nice chest, उस पे नाज है मुझे। So you were sitting there bare chested and everybody was admiring your doo-doo, as Praveen would say. Luckily there's only was a couple of people and then immediately I had a phone call saying, hey, you are live. And I was frantically trying to switch it off. And kahan live hai? Kaun si hai? And then I just went in and said, oh man. And then obviously trying to delete the video was hard. हम तो रहता है स्क्रीनशॉट उतार लेता है। जो ले जाओ यार, ले जाओ, नंगे तो नहीं रहा हम, जिस बेच रहा। सो जो एंजॉय करे से याद रखना तुम्हारा भी वक्त आएगा। उनके आज रात भर नींद नहीं लगेगी। their night will be traumatized। रात भर बट इतना हम प्रवीण के बताए दी भाई, आपके दूध से हमारा दूध छोटा है।
ओके मैन दूध दूधू है दूधू बहुत बदमाश लड़का दूधू बोले शर्म नहीं लगे. बस लड़का दूध अच्छा चलो ठीक है Well, it happens. हाँ इट हैपेंस अच्छा ना नशा मेरा रेशमा आंटी ने नहीं कहा नशा मेरा. नो 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 नो. आज की बात है रेशमा जी. रेशमा जी आपने हमारे पास शायरी नहीं भेजा चलो फ्रेंड कट हो गया आपसे हम आज का फ्रेंड कट. ओके. पिछली बार आपने बहुत सुंदर शायरी हमारे पास भेजा था आपसी बार नहीं चलो अगले बार ज़रूर हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे शायरी और हाँ और यास्मीन जी ने हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल शायरी भेजा है परम और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जबकि आज नवंबर 14 है तो तमाम हस्तियां ऐसे उनका बर्थडे है उन पर हम नहीं चर्चा करेंगे बट देयर बीन लॉट ऑफ बर्थडेज और इंडिया में कहा जाता है टुडे इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा सो या दैट्स गुड लक और पर हम शुरू करने से Yes, पहले आज yes, नवंबर 14 है इन पर इस पे हम चर्चा डालेंगे आज नेशनल पिकल डे है पर पिकल पिकल डे. वाह. अचार वाला रोज है अचार वाला अचार रोज है कुचला वाला रोज है. तू जानता है परम बोले अचार सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन खावे सबसे ज्यादा जर्मनी खावे है ये क्या है? और सेकंड में है इंडिया हिंदुस्तानी लोग ज्यादा पिकल्स खावे और थर्ड इज नेदरलैंड्स यू नो तो सो आज नेशनल 14th इट्स अ नेशनल पिकल डे है सोस डे सोस नहीं क्या कौन सी बोले इसकी हिंदी में सूत्रों के अनुसार. नहीं पिकल्स की हिंदी में कौन सी बोले व्हाट द हेक मैन चटनी. चटनी चटनी अचार 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 अच्छा. तो अचार डे आज है दोस्तों साथी और कहा जाता है कि it was created to celebrate the pickle as one of the world's favorite fermented foods ना तो इमली की चटनी है क्यूकम्बा है क्यूकम्बा कौन सी बोले विनेगर में रखा जाए ढेर चीज ना पर डू यू हैव पिकल थिंग्स एट होम रखा है कि नहीं क्यूकम्बा No, I don't have pickle, but कभी कभार किसी को घर पे जाते तो ढूंढ लेते हैं. When I go to Fiji, I look for it, but particularly I don't keep it at home. particularly you're talking about the imli chutney ना No, any अचार or any chutney, I don't keep it at home. I'm just talking about the जो यहाँ पर मिले देखो olive bottle में. olives bottle में मिले all this thing. I've got heaps at home so every time खाना में हम दो चार छोड़ लेते हैं ना. See, those things don't have any oil in it, so I don't mind keeping olive and cucumber, baby cucumbers. But अचार खास तौर पर तीखी होती है. अचार हाँ ना तो it's a तेल. tickle ना tickle it's a pickle day ladies and gentlemen also कहा जाता है कि it enhances the tanginess जो होता है खाना में ना spicy effect of the Indian food जैसे नहीं गोरा लोग बोले कि अपन खाना में लोग सॉस छोड़े हैं चिली सॉस छोड़े ये सॉस इंडियन लोग उसके बदले अचार छोड़े हैं it tend to amount to the same thing so it complements the traditional Indian dishes such as roti और सब्जी खाओ दाल खाओ ना तो Yes, of course. It also complements gastritis, you know. Very much. और ये भी कहा जाता है कि जर्मनी साथ में इंडिया और नीदरलैंड सबसे ज्यादा पिकल्स खाते हैं और आखिरी में परम यू नो व्हाट्स द ओल्डेस्ट पिकल इन द वर्ल्ड क्यूकम्बर पिकल्स Okay. हाँ क्यूकम्बर पिकल्स हम तो when I migrated to Australia तब हम जान पाए 15-20 साल पहले कि क्यूकम्बर भी पिकल्स बनावा जाए ना सो इट इज द ओल्डेस्ट पिकल इन द वर्ल्ड सो दोस्तों साथियों और खास करके रेशमा आंटी जी आपको बतला दें कि आज नेशनल पिकल डे है तो आज खाना में ज़रूर से ज़रूर आप एक पिकल डालें आज हमारे भी यहाँ करेला आज हम करेला रोटी ला रोज है सो आज करेला रोटी में पिकल तो रहना बहुत ज़रूरी है सो हैप्पी वेजिटेरियन है ब्रो. वेजिटेरियन मंडे वेजिटेरियन Okay. सो देख एक रोज वीकेंड में तो अभी जो खाया है गोश्त मांस मछली तो अभी तो पड़ो थे पेट में नीचे. इट्स अ डिटॉक्स डे फॉर मी मंडे यू नो अभी ऊपर ही पड़े थे अभी निकला नहीं. हाँ वीकेंड तो बहुत हेवी रे भाई कुछ खाया बत्तख खाया कि मुर्गी खाए वीकेंड कि खस्सी खाया. That's okay, you can share it. No, chicken. How was your weekend, bro? How was your weekend? Weekend busy as always. I haven't been seeing your Bakri videos. All I've been seeing is your stage show videos. I mean, जो भी आप लोग कर रहे हैं. Bakri well I've been putting on उसमें stories my story में but time नहीं रहे मैं जल्दी उतार के छोड़ देता रहा. Oh, okay. My okay. stories में but it gets faded after 24 hours. Yep. बट ये बकरी स्टोरीज अभी नहीं अभी तो फिर लौट के आके दिन हमारी लड़की भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा शर्माओ है यू नो बड़ी हो गई कि बड़ी थोड़ा से बड़ी हो गई है बकरी जरा नेक्स्ट ईयर टीनेजर हो जी तो अभी स्केप्टिकल है उतारो तो बोलिए वो नहीं हमने इससे नहीं लगता अच्छा इससे नहीं लगता है नो टिपिकल it's a typical teenage time आएगा मुसीबत आया लगा मुसीबत हो जी टीनेजर्स ना एनीवे रेशमा आंटी ने कहा है कि आज आई मेड चिकन करी और फुलिया कौन सी पर
पता नहीं, आई थिंक इट्स अ पंजाबी डिश मे बी। ओके। फुलिया, अरे आंटी जी आप जो जानते हैं हम लोग खाना बहुत, मैं खास तौर पे इंडियन डिशेज जो होती है बहुत हाँ, कम ही मुझे मिलता है। बोला शिवानश जॉनी। जॉनी अली जी, बुलच्ची ग्रेट बनी फॉर। जॉनी जी, अपना जो मैसेंजर है ये आप चेक करें। आई हैव सेंट यू मैसेंजर, कभी रिप्लाई नहीं करे लड़का यार, पुराना दा प्रोफाइल में वही भी नया वाला। फुल टाइम बैठा रहे मैं संजा में, पता नहीं क्या करे। नहीं नहीं, आई सेंट हिम दिवाली के इनविटेशन भेजा रहा, बट आई सेंट हिम ऑन द इसके डिफरेंट वाला मैसेंजर। ओह यू मस्ट हैव सेंट ये हिम इन द नेवर ओल्ड रिप्लाइड। हाँ, तो प्रोफाइल, सवेरे ओल्ड सवेरे प्रोफाइल आज भेजा रहा। हाँ, तो आज सवेरे सवेरे बोला ये लड़का हमें मुंह फुलाए का ना। देन चिक अरे बोला इसके नवा वाला है प्रोफाइल, तो उसमें भेजा। बोला वेरी सॉरी बट यू नो, तो कुछ लोगों को याद कर लेते, परम जल्दी से आप याद कर दे, तब दिन भी बोले ही इज move the वेटिंग फॉर pro- दिस गोट पलाव। हाँ? बोले आई एम वेटिंग फॉर माय गोट फॉर पलाव। लात लगी बेटा। तो जॉनी अली की एक और एक प्रोफाइल है, आई थिंक हिज ओल्डर प्रोफाइल गॉट हैक्ड। तो लड़का बनवासी करता रहता है कोई वाला, जो नहीं वीडियोस आवे, फनी फनी वीडियोस आवे, उस पे क्लिक करो तो यहाँ लेके जाए, वहाँ लेके जाए, they get hacked. They probably got hacked, and yeah, he's got a John Ali. ahli. Hi Renuka Sharma ji, it was nice meeting you. The first time किसी को मैंने one of the Facebook हमारे followers जो है इस प्रोग्राम का, उसको हमने मिला, मुलाकात हुई, और I think it was nice. It was actually, I went to the show. It was a tribute to the legends. It was a wonderful show. Wonderful show. हाँ, तो it was okay. Last Saturday जोन रहा। Yes, last Saturday. हाँ, Rakesh Swami, Veer Chand and Kamoda इत्यादि, they were playing. Yeah, okay. Yes. Okay, नया प्रोफाइल एक्सेप्ट किया रेणुका जी, शुक्रिया। प्रीति अमित कुमार ने लिखा है पूरी, हाँ, और साथ Hello, में Vinod Chandra. अनुराधा। विनोद भी कैसे रहा नहीं वहाँ पे, जाता? एकदम चुन में घूमता रहा लड़का, एकदम एक्साइटेड रहा। कौन जॉनी? विनोद चंद्रा। ओ अच्छा, वो अन्नू बोले कैसे नहीं जानता फुलिया, परम फुलिया हम लोग नहीं जानता। Boy, it अन्नू is जी। obviously Annu, it's not South Indian. So I don't know. अब आदमी लोग कहाँ जाने किचन में कौन सी हुए? Come on, unless you're a chef. ऐसे हम लोग खाली टी करेला है, ठूसेला है। हैंड टू माउथ है खाली, नमक टेस्ट कर लो फिर खा लो। So अफुलिया अगर किसी को बताएं कि क्या है तो जरा एलेबरेट कर दिए प्लीज आंटी, so we know कौन सी है। और I tell you, auntie made some really nice bataka. I went over there. Oh, बतख कब हमें नहीं बताया, हमें नहीं बुला इसे। तुम वेजिटेरियन रहो रोज? ओह अच्छा, मंडेज क्या मिल जाता क्या? It's a Gujarati dish. Okay. That just goes to show कि हम लोग के कितना कमती गुजराती इनवाइट्स मिले हैं। हमें जरा अनुपमा और देखे पड़ी तो गुजराती सीखे पड़ी ना। पूरी के रकम में, okay. Oh, it is probably like puri with the उसमें सीड्स वगैरह मिला के बनाया था। तमरा सीड लोग जन भी सरसों वाला व्हाटएवर। हाँ, जीरा आई थिंक, जीरा वगैरह। हाँ, स्काई देवी राम आपने कहा परम जी, और यास्मीन जी हमारे साथ में हो गए हैं। गुड, वेरी नाइस। A lot of people are with us, and yes, we are vegetarians, but Monday के ना। No, I think हफ्ते में दो बार वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि it's one thing I've noticed, हमारे जो ऑस्ट्रेलियन खाना है बहुत ही heavy है। When you come from Fiji, you know it's heavy. When you go to Fiji, you know it's very light. वहाँ के जो खाने होते हैं। When you come back here, you can feel the food, ना? You can feel the food, brother. Yeah. Although यहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन I still think जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है, it's totally different from what we get over here in a local market. Exactly. Yeah. So let's start the program. उसके बाद में बहुत सारी बातें आज कुछ बातचीत करेंगे, और in a fortnight Pranol is going, he's paid my airfare and said Pranal जी आप शो में आओ, he's sponsoring, तो I'm so delighted. कोला नहीं तो ऊपर कर लेता। So उसके चलता संगे ऐसे फिर कर तो मतलब आमिर खान कर लगता है ऐसे नहीं। आपके मुंह में घी शक्कर बेटा, आमिर खान नहीं, घी नहीं शक्कर दोनों डालेंगे तुम। अच्छा पिकल्स डाल। अच्छा, ये काहे घी और शक्कर बोले हैं? अच्छा, हम लोग चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर घी शक्कर के बारे में बातें करेंगे। तो परम आज हमेशा अपना जो प्रोग्राम है हम बहुत ही सुंदर शायरी से शुरू करते हैं, और आज शायरी शायद आपने सुना होगा परम, कुछ गंभीर सा है, और अमिताभ बच्चन इन्होंने लिखा है, तो उनकी आवाज में तो नहीं बोल पाएंगे, मगर कोशिश करते हैं, और कोशिश से बढ़कर कुछ नहीं है। कहाँ पर से हम प्रिंट करके लाया, बट पेपर थोड़ा इधर उधर हो गया, बट यू नो इट कॉट माय अटेंशन बिकॉज हर एक पंक्तियां में इट्स गॉट द मीनिंग टू इट। पर अगर सुनेगा, माफ करना दोस्तों थोड़ा लंबा है, हिंदी
हिंदी तो राइट है, बट जगह जगह पेपर फट गए तो आई माइट स्टम्बल लिटिल बिट, बट ऐसे पर ये लिखते हैं। और यूट्यूब में प्रोबब्ली शायद ही मस्ट बी सेइंग दैट, आई डोंट नो, अपने घड़ू आवाज में, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन लिखते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे लिखते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, परम लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। वेव्स के डर के तो जो नाव चलाए वाला डर नहीं, ओके नौका। और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कितना अच्छा बात ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास ये रहता है कि आहम भरता है, मन की विश्वास रंगों में आहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। क्या बात, चढ़कर गिरना, गिर कर। थोड़ा पैपा दिखाए नहीं यार, चश्मा लगा है तो वो भी नहीं दिखा अल्लाह। राइट। और आगे लिखते हैं, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राइट। दुबकिया सिंघू में गोतादार लगाता है, दुबकिया सिंघू में गोतादार लगाता है, यानी कि जो पीपल समुद्र में जाके पर्ल खोजे लड़का, जो गोतादार होते हैं ना, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं साहब मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं साहब वो मोती गहरे पानी में, बढ़ता बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसको खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बेचारा डाइवा जब जाए नीचे ना, तो यू लुक फॉर पर्ल, हम लोग फिजी में से नकाई खोजता रहा ना, मुट्ठी भर ऊपर लाओ, देखो नकाई नहीं है तो उसमें पर्ल नहीं है, फिर भी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कभी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। I remember a few years back, अमिताभ बच्चन said this on his कौन बनेगा करोड़पति, और उसमें he was not reading from anywhere. पूरा इतना लंबा पोएट्री है, अमित कविता है, he just like this. His mind is super active. He's an actor. कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अच्छा होता अमिताभ बच्चन बोली कैसे रही आवाज, तुम अभी you are sounding like अमिताभ बच्चन, खुशी लगे तुम्हें? चला बोलो, कोशिश करने वाले की हार नहीं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। दोस्त साथी और जो कोशिश करती भी हैं वो तो बट कितना अच्छा से ना, बोले चींटी बोले अपन दाना लेकर जो दीवार पे चढ़े, गिरे उठे। अगर राजकुमार उसी तरह के ये बात बोलती तो क्या होता? बताओ, गटे नहीं बैठ जाए तुम्हारे कुर्चाई सिंह गटे गाना गाए के। बट एनीवे, तो तब बतावे कि ना चींटी जब ऊपर चढ़े गिरे फिर भी कोशिश करने की हार नहीं होती। Have you seen the cheetahs going when they carry the food and they go? Have you seen them? कभी observe कराओ लोग के? I've noticed them a lot of times, many times. Yeah, you see them, study them, how they go. इन दूसरा अलावा इसको टोट मार के जावे। I don't know कौन सी लोग information पास करे ना। It's quite interesting. Very interesting. They don't have eyes and things like that, so they only can feel each other. But you know, कोशिश करने वाले मार के फिर चलाए फाड़ जावे। Different direction चल दे, but वो फिर लगा मोटिन फिंस कर दो। So बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बयान किया है अपने इन पंक्तियों में। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। गिर कर उठो, उड़ कर गिठो, whatever it is. गिर के उठो, घाटी फोड़ के उठो, लेकिन उठते रहो। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं कि देखेंगे कि सिडनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही है, उसके बारे में कुछ चर्चा और साथ साथ में कुछ इंटरनेशनल शोज के बारे में।
ऑस्ट्रेलिया से बुला और नमस्ते, सबका स्वागत है आज के शो में। चिट चैट मसाला है शो का नाम, हर एक की जुबां पे एक ही नाम। तो आइए परम और प्रणोल के संग, तो आइए परम और प्रणोल के संग। वीडियो के में से कितना अच्छा हम तुम हंसता है ना, हंसमु गदा हम ये वीडियो जो क्लिप है ला उसमें कितना अच्छा हम हंसता है ना, मतलब अरे मैंने कि एकदम गद्दर मुस्की है उसमें हमारा तुम्हारा। और हाँ, थैंक यू वेरी मच टू रानिगा ब्रदर्स, रानिगा स्टूडियो से हम उनको कहना चाहेंगे, दे वेरी ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड टू हैव देम इन आवर पार्ट। और ऐसे ही जिंगल बनाते रहें और अपना जो प्यार है ये हमको व्यक्त करते रहें। ओके, लेट्स मूव अहेड लेडीज एंड जेंटलमैन। हम आपको बता दें कि कुछ शोज होने जा रहा है सिडनी में, और ये है नासिर भाई का ये जो मोहब्बत दैट इज़ हैपनिंग ऑन द 3rd of December हियर इन सिडनी। और सांस बैंड के संगीत से इन्होंने सजाएंगे इस रात को। तो फिर इन सिडनी एंड यू नो या तो मेलबर्न या तो किसी भी जगह पर आइए, भाई नासिर को सपोर्ट कीजिएगा। इट्स एट रेडकम फंक्शन सेंटर। और साथ साथ में हमारे जो दांतों का डॉक्टर है जो आपको तबला बजा कर गाना सुनाएंगे। जब सुन कर देते तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो he'll play some tabla and entertain. But I must add here, if you may, if I may, हम जब बहुत long many time जब हम single then I came to Fiji, came to Australia, and my mom always used to say, "Hey, तुम जानते हो बोले कि हमारे एक favorite singer यहाँ पर है।" हम लोग कौन है? बोले डॉक्टर अनिल है ना। तो single days में जब मैं आया, then I kept that in the mind, is नाम डॉक्टर अनिल singing doctor ना। And then when I migrated, then I had the privilege to play with him, and then he's a great personality. We wish him all the best. He's an all-rounder musician, you know, everything, you know, and he keeps all his posters. One day we should talk to him to show him all the posters of the yesteryears. कितना साल से याहू करे ना, he must be doing for Yeah. ages and ages. My mom used to go to his shows all the time, never missed it. And welcoming all those friends that are joining in. Thank you अश्विन भाई जी, और साथ साथ में और भी जितने अभी गाउंडर जी। आपका बत्तख वगैरह कैसे चल रहा है? सब बिक रही है होपफुली। he sells ducks and साथ साथ में मुर्गी और बत्तख। if you're going to Fiji you go to Langere में तुम्हें मिली। It's तो मिला अभी गांडर से? Yeah, I did. I posted a photo. Didn't you see it? कैसे तुम एनिमल के मिस कर दिया यार? हम बत्तख के फोटो छोड़ा, मुर्गी के फोटो छोड़ा। I miss कर दिया brother, miss कर दिया। But कौन सी पर is it correct that Abhi Gandar is standing for elections? I don't know. We'll have to ask him. He's listening to the feed. He sent a message a long time back, if I may be, if I'm wrong, but Abhi Gandar मेरे ख्याल से is standing for Labour Party में मेरे ख्याल से is one of the candidates. If he does, congratulations if he is. all the best. Yeah, Johnny Maris Hatora देखो बोले who's promoting your show, bro? Your show, your show परम हाँ अभी है फोटो लगा, फोटो लाओ। No, बोले who's promoting your show? बस Johnny का कहने का तात्पर्य ये है कि I'm promoting everybody's shows. Who actually shares my poster? Who shares that kind of story? अभी वक्त आई, then we can do 100%. So Johnny, you take these people, you know, to task. Vinaka Param Shivan, हाँ Vinaka. Okay, are you standing for election? Avi Gandar ji कहाँ पे किस जिला से बैठ रहे हैं? Anybody can actually vote for Avi Gandar. I think this time around you can vote from anywhere in Fiji for any candidate. Yep. You don't have आपके इलाके में नहीं होना है। कोई बोले हम पत्थर रास्ता बना देगा, ये कर देगा, टासिल करा देगा, अब वो रकम नहीं है। It's actually changed. Yeah. So okay, that was डॉक्टर अनिल का शो है, एंड ऑफ कोर्स दिस शो, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लोकल टैलेंट्स भी आप यूज़ कर रहे हैं ना प्रणोल भाई? लोकल है ना, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट प्रोबेबली इमिग्रेशन के ना, a few locals तो मांगे जरूर से। So okay. But it's a charity show, so it's gonna. Are you looking forward for it? Looking forward, brother, very much looking forward. I'll give you a reason, and plus of course Krishna ने बतलाया है कि last I spoke to him 500 tickets ऐसे ही बिक गए, you know. Okay. So wow. It's got a capacity of 1,000, so he's gunning for 1,000. But परम हम मतलब एक बात जरूर से बताए कि this अगर हम बात करें तो this is a very a big musical challenge that is coming up, and this is very I would say nostalgic. और काहे है कि because we have got True Vibes, अगर आप follow करते हैं, I think you don't follow True Vibes band. Of course I do. What do you mean I don't?
So the singers, one or two singers ही बचा है, Sunny Boy है, इधर James Madhavan. Okay. The others are slowly going up to heaven now. ना तो बहुत कमती लोग बचे हैं True Vibes से related, right? Yeah, Musicians तो है, Robert है, and उनका a few बेटा है. people there, ना, करुणा गोपालन, करुणा है ना. Yep, So yep. but singers में देखा जाए तो फिजी में फिलहाल Sunny Boy ही एकमात्र हम कह सकते हैं, one of the main lead singers who's still there. So why I'm saying nostalgic, because we are going to play for the them. first time, for them, for Okay. Sunny or Sunny Sabdin Bole. It probably would be one of my last ones, and think because people are leaving for heaven. So इस बार के लिए हम जरूर से जरूर, I'm very happy to be playing for Sunny, because जैसे कि आपको हमने पहले ही बतलाया, I'm not blowing up my own tires, but when I was in Fiji, I was his Sunny Boy के keyboard player for a few years. So we used to be together. We used to tour Fiji, in Lambasa, you name it. No? So we were there, and then of course I left for university and blah blah blah. Then, but after so long, after 20 odd years, I'm going to share stage with him, and these are the people whom we look up to. Sunny Boy है, और यहाँ पर है लोगों को बतला दे, जैसे कि James Madhavan, he was in True Vibes Volume 2. Sunny Boy started Volume Suta Lagao, Gali Gali में फिरता है, और प्यार बांटते चलो, ये सब गाना. So we're gonna revive a few of his numbers on stage, and we're gonna play not exactly True Vibes को तो match करना तो बड़ा मुश्किल काम है, but we'll try to match the music with the likes of True Vibes. Yep. और जितने भी लोग सुन रहे हैं, if they are in Fiji and अगर आप True Vibes को भी देखना चाहते हैं, a bit of fusion, so we will be playing. So the song that I sent you, Param, that's a background to that. Sunny Boy was the main lead singer with Gali Gali. Shall I play this? Do you have it there? If you can do that, we will try to emulate that, and we will see. Got it there? That's the one. So that's Joanna and Sunny. So this recording was probably what, 20 years ago? Yeah, more than that, bro. 25 and Georgie. तो जो लोग हमारे जो बॉलीवुड म्यूजिक पसंद करते हैं, आपको बताते हैं, ये फिजी की जो फ्यूजन म्यूजिक है, इट्स ओन sort of a music called reggae. That's Sunny Boy there. That's Sunny Boy. It still sounds the same, I believe. It still sounds the same, eh? So let it go. Any news on Joanna? Huh? Joanna? Joanna is in New Zealand at the moment. She's not singing. All right. So let it go. There's another song attached to that. So we're going to play these two songs. And Sunny is looking forward to that as well. So, so True Vibe ke liye, we would be happy to be a part of this. You never know. So these were our idols when we were young. We were looking up to. A simple three chord गाना है. It sounds so nice. तो कैसे तुम डांस करोगे गाना पे, हाथ ऊपर करके? तो बजाएगा. क्या डांस क्या करता हूँ? How would you dance on this, bro? हाँ, तो पूरा मटकाएगा. And this one we will gel that to this one. It's a very meaningful song by none other than Dayanand sings. Sunny Boy. Maybe two song गाना है. You know how they the two chord गाना है, bro. 3 chords and 2 chords. That is रे वहाँ पे बोले, hey,
गाना में Try to sing all these soldiers together. That's it. I'll let it go. More? Okay, okay, that's it. So Okay, कहा जाता great. है परम कि उस समय जब कैसेट्स if the True Vibe the cassettes निकला था इस बैंड ना लोटोका के तो True Vibes है ना. So कहा जाता है उड़ती उड़ती उस समय there were no written records of this. मतलब यह है कि there were more than 10,000 cassettes sold at that time. तो विश्वास करेगा. So 10,000 cassettes and Param, yes, the Fiji Career response, it has been great. Many people have invited us at their houses with free booze and free grog and free batak and all these things. इतना अच्छा लगे कि people बोले ना जैसे they're inviting the whole team. But बकरी नहीं ऑफर करी से बकरी जन दे इसके हम गटाई काट देगा. But so we are very very humbled, very privileged. But next weekend तो चल देगा हम लोग. So Param, this time we will miss you. Last time you took us there, it was great of you. Simstar के साथ में share किया था. Yep. So all the living legends are in Fiji, and Yep. hopefully we all get to enjoy their music in these after years as well, ladies and gentlemen. Yep, और yep. जैसे कि किसी ने लिखा है कि किसको बुलाना है आपने आपके पास क्या लिखा? Jimmy Subedas. Jimmy Subedas is there as well. So One of the Param, legends alive. you one had- of the last legends alive, bro. you were about to bring him, and then this COVID hit, na? COVID thing, ki Mahamari, yes. Maha kar this na. So, but you have brought him before once, na Param? No, I haven't actually. Rosie brought him. Anthony's Rosie, wife, Rosie. Rosie brought Jiten's him. Sas, Yes. Oh, sorry, yeah, Jiten Sasa. Anthony's wife. Yes, correct. Anthony's wife. Yes. So, that was a long time ago. Yeah, long time ago. So, अगर परम के तकदीर रही परम तकदीर तो परम you should get him, bro, get him. Yeah. But I lost anyway, a lot of money, but nevertheless, COVID yes, was रेशमा सिंह ने लिखा है कि परम was working for printing, but of course, Not Param. Sunny was working. Yeah. Okay, and yes, और कौन सी है? ढेर सारे लोगों ने respond किया है. You should bring Savitri the singer. Yes, Savitri auntie we used to play together as well. Where is she? लोटोका के. I don't know. The last I heard, we had a chat. हम जब गए Fiji long time back. Okay. We had a chat, but I don't remember whether Savitri. she's around or not. Savitri auntie, she sang very well as well. और शादी ला घोरा ऑस्ट्रेलिया से आए कि फीजी ला मांगे. Huh? शादी ला घोरा ऑस्ट्रेलिया से आए के फीजी ला मांगे. सॉरी फेसबुक यूजर नहीं अंडरस्टैंड कर पाया. You've got a जो भी है. एंड अश्विन ने कहा है माइकल सुक्कू द लेजेंडरी bassist, he was with the Gypsies, right? Gymnos and Gypsies, and he's in California, मेरे ख्याल से. He's still here, but he plays in the church as well. Abhi Gardner ने कहा it was all reggae at that time, late then, and of course then came a bit late, not fully late, a bit late, but that time True Vibes was full on. And yes, ढेर सारे लोगों ने very good Dream comments. lineup: Simstar, Jimmy, Sunny, and DJ Pranil. Jimmy Subedas, Sunny, and DJ Pranil. Dream lineup. Dream lineup, Simstar, of course, Jimmy and DJ Pranil. That's a good lineup, brother. I mean, Since they're all in Fiji, it's possible in Fiji. huh? It is possible. It is very much possible since all of them are available in Fiji. So it's very much possible that it could be done in Fiji. It could be Very done in much Fiji. possible. However, if these three, I mean, I should be देखा जाए, but no offense, but there are a few living legends in Fiji. They passed their prime time, and plus Ronald J as well in that legend. Ronald J is yeah. also there. Yes. So it would be interesting to see if people can bring them over here, and then just like Shan आवे है तो all these people run after them. We expect if अगर Fiji के कोई legend यहाँ आवे, we definitely expect people to पर हमारे पर फितूर में तुम लिखा दो यार. किसके? Anybody, any living legend. It's easier said than done because अभी जो paperwork इत्यादि है approval process, it's quite involved. It's not very simple कि this and that. It's much easy. पहले का रकम it's different. Now it's different. But we did start the process, but we lost quite a bit of money because when you lodge applications and
paperwork plus deposit this and that. So you lose those money. COVID के और द्वारा हम लोग लोग के ने lose कर वीजा डिफरेंट नंबर है rather than the Yeah, they tourist have it. visa ना वो बात Yes, हो yes. जाए So there's a lot of things involved when you're bringing an artist. It's just not simple. But I primarily concentrate on Fiji artists. But if God willing, if it doesn't happen here, it'll happen in Fiji. But that will be my But- last leg for. But one thing I must say, पर by the way अभी ने लिखा है लेजेंड तो सब भाग गए रहे परम के देखो. Thank you very much. But परम one thing I must say, I'm not कोई की बड़ाई करे वाला person. I'm always talk good about people and I talk good about you because अगर आप देखा जाए so most of the living legends जो फीजी में रह चुके हैं they are not with us anymore. अगर आपको रिवाइव करना चाहते हैं do go to परम सेवन के जो पेज है. Remember Fijian TV. even before I didn't know Param very well, I saw the interview you had with Dayanand. So all these people अगर बाद में so कहा जाता है ना कि हम लोग कुछ लिखे नहीं सकता है तो just put it on YouTube or Facebook. It For stays years there to come, for years to come, people for will years see to come, ki for who generations it to was. come. It is still there. Na? The songs will So still it's be a good played. thing. I think you've covered not most, but all the Yeah. living legends मेरे ख्याल से Param. I did my best. And those who are alive, I did. मेरे And ख्याल एक से दो कोई छूट बचा गए है? थे. I've actually interviewed Jimmy Subidas, so I've still got that tape on a tape mastered there. So I have to edit that one. हमें edit करके निकालना पड़ेगा. So I did his as well. Jimmy और ढेर जन क्या you've covered so many हस्तियां Yeah, जो yeah, फीजी yeah. में आपके Yeah, yeah, ज़माने में थे और अभी भी है Yeah. ना. So Quite a lot of them. So let's hope there's somebody else like you in Fiji who can जब हम लोग का legend हो जाए हम लोग तो बुजुर्ग हो जाए तो हम लोग कीमती वक्त निकाल के कीमती वक्त revive निकाल कीमती के. वक्त निकाल के हम लोग के I enjoy actually talking to them and sharing what they went through during their time. It's just wonderful hearing from them. I remember Hurricane Bibi as well मेरे ख्याल is that Yes, yeah yes. Hurricane Bibi yeah Hurricane Bibi के भी आप so Hurricane Baby. Hello, So Param it bhai. is- Hi, Rohit. Sir. How are you? coming to सुबह भाई सुबह बहुत दूर है लौटोका से यार 3-4 घंटा Patak, की Patak. आई है He's gonna meet you over there for the Patak. So yes. और डर भी तो लगे बिकॉज हाँ देखा जाए तो देखा जाए परम तो फीजी में जनरल इलेक्शंस भी है दिसंबर में तो जरा सतर्क रहना है हमें Yeah, है ना? 16th, I think 16th is announced to 14th is the last 14th, day for okay. our TAFE here so yeah that's how I remember. मोनिश शर्मा मोनिश भी है भीतर मोनिश कहाँ पर है मोनिश कहाँ कैसे है भैया मोनिश शर्मा? I'll ring I you up didn't tomorrow भाई आज तो तुम बिजी हो गया परम प्रोग्राम में रख ली से but definitely we will have a chat Manish Sharma ji, okay. Radio Fiji 2 guy. रेडियो फीजी टू का है अभी वार्तालाप बहुत ज्यादा हुए हमारे उसमें he's a very witty person funny person पर I think we should get him इसके wittiness हम जो देखता है I जो know, बात I've करे seen, वो yep. I think we should get him as a guest and see माहौल कैसा है फीजी में ना so elections भी तो आवे हैं and things like that so Hello Monish is Rajiv very और Shelvin Ram भाई आपको वेलकम करते हैं. He's listening from River Road, Narere. Yes, okay. Thank you for watching us and हम लोग every fortnight live आते हैं और कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को बरकरार रखें. इंशाअल्लाह हम लोगों की ज़िंदगी रही और वक्त रहा तो हम डेफिनेटली इंशाल्लाह और परम आपका जो फितूर 2 है फितूर 2 yeah it's actually been moved. moved हो गया है so we've all written in the diary so the guru's band आप कोई नहीं सके बोले कि हम बिजी हैं हम यहाँ हैं वहाँ है ना. कोई नहीं सके बिल्कुल नहीं सके हम तो I have locked it down and Yes. I've told the boys that we all will be going to Param show हमारा and 10 getting टिकट it तो back. 100% sold है so that's 10 टिकट हमें दे दे तो बेचना नहीं 10 हमारे boys के अच्छा you know Okay, it happens I take definitely. tickets off and then my boys लोग दूसरे से खरीद ले so Yeah, so yeah. we all are coming there full support we all be भैया there with the थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बिकॉज हमें कहीं मौका नहीं मिलेगा ना गाय के तो अपन शो करके अपन बैंड बाजा बजा लो. नहीं that's right अरे आप No, there's a lot of talents in capabilities Sydney. है, हाँ. There's a lot of talent in Sydney and we cannot fit everybody in a show. This is why there's a lot of किसी ने मुझसे फरमाया है कि बहुत सारे shows होते हैं सिडनी में. But talents are also here, no? A lot of singers are here, a lot of musicians are here. But पर एक बात हम समझ नहीं पाता with you and our promoter Naz Khan as well. तुम लोग जब इतना मेहनत करता है, I'm not saying don't take me wrong. And then I believe that you personally or Naz Khan personally should be singing more songs than the other singers. Don't get me wrong, the other singers can नहीं down करता, but the hard yaka is done by you. So as I have seen you when you have a show, आप बहुत कम गाना गाते हैं. I mean, Well, I think someone's actually said over here, in reference to me, he said bathroom singer but not live show.
Okay, that's one person who's नहीं not आप going to नहीं buy. नहीं आपके नहीं सॉरी आपके नहीं बोले आप बाथरूम Oh, सिंगर हमने नहीं नो बोला, लाइक okay. ना डेफिनेटली हाँ, आपने कहा कि ढेर टैलेंट्स है तो टैलेंट्स आर देयर बाथरूम सिंगर्स आर देयर बट Okay, okay. ओके बट ना सो रेशमा आंटी ने Nevertheless, 10 टिकट्स खरीद लिया देखो 10 आंटी ले ली 10 हम ले लिया ब्रदर सो I'll do my पर best वेन्यू anyway. वेन्यू कौन सा है भाई Red Gum Function Center here in Wentworthville में है. रेड गेम व्हाट्स द कैपेसिटी फॉर दैट अबाउट 300, 350 350, हाँ हाँ 350, yeah. very So nice. Looking hopefully forward we'll to see that, all brother. our families and friends. with the live music and everything fantastic Yes, of course, Lovely. live band. And जब live band की बात होती है, I actually witnessed these guys who will be actually playing for me. So थोड़ा सा मुंह बजाते हैं. And of course our Lambu, Why you Vijay went? Kumar. No, अच्छा that's why you went. Oh, अच्छा बेटा अच्छा So that's I'll why play you a went little last bit of a week, clip. Saturday. It was a wonderful show. I think Reshma was there and Renuka was also there. So ये थोड़ा सा. Okay, our crowd capacity was good. Correct. सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से मैं इंतजार करूं ये दिल निसार करूं मैं तुमसे प्यार करूं हो मगर कैसे एतबार करूं झूठा है तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये कहाँ कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं हमारे सामने है हमारे बाद नहीं किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं अरे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं अगर पीजीटीवी ऑस्ट्रेलिया से बुला और नमस्ते। आपका स्वागत है आज के शो में। चिट चिट मसाला है शो का नाम। हर एक जुबान पे एक ही नाम। तो आइए परम और प्रणोल के संग। तो आइए परम और प्रणोल के संग चिट चिट मसाला शो में। तो आइए परम और प्रणोल के संग। तो आइए परम और प्रणोल के संग। Yes, that was a very, very small clip. So that's actually, Very well played, very well very sung. well किसी ने played, कहा yes, है yes, yes, yes. मेलबर्न के फिजियन प्राइड विजय हाँ बिल्कुल सही Yep, और ऑफ कोर्स उनके जो बिटिया है काव्या Mhm. she's growing up to good singing as well so yeah it was good fantastic like the video that I have just seen and wishing you all the best the same team Kamoda भी तो रही ना Kamoda Yes, is there as Kamoda well. was there playing as well, yeah. So it was quite wonderful and the music was good. So, yeah, it was a great show. So, those are the musicians. which उसके बारे में कुछ बातें करते हैं. Then moving ahead with the program, Pranol bhai. So, there is another show coming. आप लोगों का January, February में you guys are playing as well, ना? Okay, yes. That's good. So, and February में भी है एक आधा show आए but we are cutting down on the shows next year. Cutting एक आध show down. नहीं कर दिया. It's a lot of commitments, ना? lot of commitments है family भी है ना तो we are all thinking so एक दो और है but we're going international next year एक दूसरा country Okay. जाएगा हम लोग so things are on the way but that's Rania I gave my chit chat पे hello Rania Oh, Rania. wait करो Okay. तुम wait I think if they are not, I think it's actually जो दिखता नहीं है photos because they have not liked the VGTV Australia page. That's why you can see that way. If they like the page, and then we can see the photographs. okay तभी से. I did Rania but, anyway so that's the Bakri girl or yes so we've cut down on a bit of shows next year but I'm just gotta go easier Buddha Where is the Bakri where's the Bakri Rania तुम्हें वेट करे कजन लौट के आओ तो फिर
दिखाई तुम्हें जनवरी में आई थिंक इज कमिंग ओवर सो या Ashwin ji. So Param, देखा जाए तो yes, a lot of shows happening next year as well, right? So it was a good thing that when two shows clash and then you moved it, so it gives us more time as well. Yes, so yes, everybody of to course, we of save course, money as yes. well. पहले से अगर date को ऐसे लिख देवे, then we can start thinking and planning about that saving money Yes, as well. yes, of course. पहले अब हम से लोग कोई date- पार्टी में जाए कि पर हम इसे टिकट खरीद के whatever ticket it is, चुप्पे बैठे आदमी ने we gotta run to the bar, we gotta run to But the I must also say that if you plan to do a show, do let people know कि I'm doing a show. correct. Rather than cooking into your own house and saying कि हम show करेगा, but there's nothing out in the public forum, so people will not know. So my take on that, my gripe on that is, if you're planning to do a show, जब परम date रख दे है, then it falls on yours, then it becomes a problem. I think it's not just me, I think it's everybody, that if you're planning एक दो हफ्ता, at least 2 weeks की gap दो ताकि people can actually go and enjoy the show. Because बहुत सारे functions होते हैं यहाँ पे Bruno. So if Pranol is playing on one weekend, the other weekend नहीं like इसके ऊपर तुम show कर दो. You know what I mean? Yeah. So it gives the audience an opportunity to see, because साल में एक ही बार लोग concerts करते हैं. I think it's just logic. It's just logic. और पहले से proper prior planning रहे तो ठीक है ना. Yeah, because everybody works hard. पैसा लगता है, मेहनत लगती है, all these things, man. And you know how hard work it is, Pranol. You know that. Yes, exactly. Nitty gritty बहुत ज़्यादा है ना, इसमें Yeah, मोटा भी ज़्यादा हो जाए. और the other thing is that if you put a show on a day and then आप घोषणा कर दो and then when the time comes and तब तुम बोलो अरे हटाई दिया, so हटाई the दिया. other people gets affected as well, and things Yes, like yes, that. yes. So Yeah, a lot yeah. of things करना है. I received a few calls. काय हटाई दिया. काय में कर दिया. So I cannot fulfill everybody. काय में कर दिया. अरे वहीं रहने दो. हटक. Yeah, it clashed with other people. Yes, yes. आपने लिखा है कि Yeah. with the other And shows as well. hopefully it won't clash with anybody else's show. ना आपके तरफ तो फेस्ट होगी. Anybody does that, anybody clashes on that show, I will definitely say it will be तुम intentional. Facebook में जाके तो हम लिख देगा. हम लिखेंगे, हम लगे it is just intentional ना, कि नहीं तो सबको okay, जाने okay. पे choose any other day, man, not that. Choose a date a week after or 2 weeks, whatever, so the audience So get an full support opportunity. for your Fitur too, my friend. All the best and then. Yes, thank you. खाना भी अच्छा मांगे. Of course, I will definitely try to taste the food before it goes on the table out there. भैया अगर I Fiji think crowd आना है it's तो actually a केशव. very important. It's a very important factor कि खाना बहुत ही अच्छा मांगे. खाने बहुत नहीं अच्छा, but खाना अच्छा मांगे. पर हम एक चीज है, I think so. हम तो कहता Fiji crowd अगर लाना है तो केशव ही एक guy है. He is the dude to go to. Keshav, the one who was in Yes. Of course. because the And taste I think, matches our taste, that's what I'm saying. Yep. So yes, it's more like Fiji, na? Fiji More वाला like 100% taste, like ना? Fiji, ना? Yes. So केशव है और साथ में और भी लोग हैं जो they do all those things, catering करते हैं. So it's important, yeah. Well, moving ahead with the program, ladies and gentlemen, आपको ये बता दें कि एक इंसान के बारे में आज तुम बात करना चाहते हैं. What have you got on there, my friend? Okay. Yes. I've got रेशमा जी ने कहा goat curry last week भाई. तुम हमारे नजदीक नहीं आना तुम. नहीं. Oh, last Saturday I wasn't there. On the last Saturday. Goat curry last कहाँ? Saturday I तो don't know. Huh? Last Saturday तो show रहा वहाँ पर. Oh, show me goat curry. I didn't. I just got some chicken and other stuff. फिर उसके बाद में we went and have some kebab बाद में. So okay, moving ahead with the program, ladies and gentlemen. March 26th of November, Pranol की जो team है वो उतरेंगे Fiji में और they'll be having a charity show at the Tilak High School, which is in Lautoka. And if you're not doing a fabulous ticket, fabulous ticket है परम और or if you're over 70, it's free, isn't it? over 70 बच्चों के लिए free. The crowd capacity is 1,000 तक हॉल में रहे, but 500 tickets have been sold. और ये भी है परम कि क्या है charity, it's very important because हम लोग choose करा है because there are according to Anna Krishna कहा जाता है कि वहाँ there are a group of young boys who are unemployed, moving around, they don't have a proper soccer field, right? तो वो पैसा collect करके they would be renovating the existing soccer field. और साथ में कुछ unemployed boys है, they want to buy some musical instruments. Raina बोले no goat curry. Don't worry, Raina, we won't do that.
We won't So do that. and so they would be buying some musical instruments as well, Param. So that's a bonus for them. So Rashma musically, they Singh, are no telling. duck in goat. के vegetarian है. Anu Okay. ji ne kaha, thank you very much, the Guru's band. Thank you, Anu ji, for your blessings and everybody. Excuse. Looking forward to that. And yeah, Anuji, you see should you there. organize something in Melbourne and we'll all come from Sydney. हमारे जितने भी कुछ शो गोवर्स भी होंगे, बस वगैरह करके आएगी, गुरुस की टीम है, जितने भी सारे यहाँ के म्यूजिशियंस जिनकी जो whoever we can grab it, we'll just gel in Melbourne. What do you think, Pranil? हाँ यार, बटोर के एकदम जर जितना गया हम यार, लोग के म्यूजिशियंस लोगन एकदम बिल बनालाम जर गया यार. एक फल अरेंज करिस रहा everything and A to Z paid and everything नाम कोलगेट मिलेगा. लगा था And then end में पतली गली पकड़ लीजिए, so he destroyed my reputation here. But Anu ji, Anu के we trust Anu. अगर कुछ करेगी तो वो yep. काम की करेगी. So, So Anu अगर करेंगे, ओ परम by the way भी बता दी कि Yeah. जैसे कि हमने बताया है कि जैसे अनु जी ने शो रखा है तो वहाँ पर खाली सिडनी नहीं, we most of the our friends would be going to Sydney as well. जैसे कि हम लोग फिजी जा रहे हैं, most of our friends are going to Sydney, yes, to Fiji Anu, as well. do something. आप खाली ऑर्गेनाइज करो, टिकट बेचो, बाकी की जो लॉजिस्टिक्स है देखो. हम लोग यहाँ से आएंगे, बस में बैठेंगे, 2-3 बस करके से बारात में नहीं जावा जाए. हम लोग यहाँ से आएंगे, गुरुस का जो टीम उसको पकड़ लेंगे, हम संभाल के इसे लेके चलेंगे. और वहाँ पे हम आके उर्दंगा, कौन सी बोले और फिजी भाषा में उर्दंगा उर्दंग करेंगे हम लोग आके. काश के हम लोग यहाँ से सुख के छोड़ेगा, संचर के सवेरे हम लोग पहुँचेगा. एकदम पूरा आलू चौका हम आगे बना रहे गरम गरम. वही ले आलू चोखा with the side lamb बैगन भी chops. सके ना पकड़ के ले. बकरी की तरकारी नहीं खाता, वेजिटेरियन है. शादी नहीं है. It's not शादी वाला, right बात आलू तो बोल रहे पूरी. तुमको अपन डिमांड्स दे लगा, पूरी बनाना, ये बनाना, वो बस बनाना. नहीं हम लोग बस हम लोग इतना दूर से जाएगा हम लोग ना, ऐसे सफर करके नहीं वरी करो, हम लोग रास्ता में बना लेगा खाएला. There's lots of places but we'll come there and do the hangama. आप खाली ऑर्गेनाइज करो बस. रेशमा भी आज हम लोग संगे बस में बैठ के. हाँ, रेशमा टीवी. जौन रखे हम लोग गाते जाए इधर से. अच्छा, एनीवे पर हम देखा जाए तो फिजी में इलेक्शन से 2022 में दिसंबर 14 को, तो आप सभी लोग तैयार रहें. Who do you think will win, my friend? हैं? Who do you think will win? यार कैसे बताइए, अभी तो हम बहुत अभी मुंह से अगर बताओ. अभी से फॉलो बताओ. नहीं करा लाइटली, बट yeah. the other party is gaining momentum as well with the candidacy. रंबुका वाला. रंबुका के जो कैंडिडेट्स है ना, के जो कैंडिडेट्स है, they are quite credible, पढ़ा लिखा है, experienced है, and blah 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 blah. Probably they might pull up, I don't know, अगर Fiji Fest और ज़्यादा अच्छा नहीं करे तब, Do you think So- Fiji is ready for another government, a new government? They should 15 years on the driver's seat is a bit too long, I would Yeah. say. Sorry to See, say, us- नहीं, but us- अब तो us Fiji, people- I take my words back. I took away because Fiji जाता है भैया, अब कुछ नहीं हो जाए. But I wish anybody who wins all the best in Fiji. But 15 years हो गए, मौका दे देवा गए है ना. If anybody can think otherwise. It's not कि आप you're gunning for it. You're just saying कि what your views are, I suppose. And what my gut feeling is, if you ask me, पूछो हमसे. हाँ, पर हम बुतन रोका तो है ही नहीं. व्यक्तिगत बुतन रोका ख्याल तो है ही नहीं. But I think Fiji Fest will retain the seats. By the way, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अभी it's happening on December time. So there will be some incentives coming out for people once again, and I think that incentive will take their vote. And I think for anybody to break into politics in Fiji and rule a government and come into power would be a lot to ask. I think people are very much settled at the moment. उनको unless something happens, उनको भड़काने के लिए something tremendous has to happen for them to change the So party, I think. if you look at our scenario here in Australia, you see that the government was our Labor government. I mean the thank you, but our Labor our what do you call it? Our Liberal Party was in power for a very long time, and then people chose to have a change. Though they were ticking all the boxes, though they were providing everything under the sun, Yeah. सब कुछ अच्छा चलता रहा. But then people tried to, जैसे कि जॉन हावर्ड के संगे फेरा, but 11 Yeah. 12 13 years रहा. Yep. So people were tired of looking at one face without any reason उसके हटा देवे गए, and then everything collapsed after that, but if you see too many if you see the driver many times, things can go wrong as well. Yeah. And I believe what Fiji needs is a young party.
They need young backbenchers. They need people. I think a lot of reputation is started with rumors, ना कि ये भे वो भे वो भे. And I think सुना ही बहुत ज़्यादा बात होता है. And when it comes to election, जाके चुप्पे लोग दे के चल दे vote. You know, they say one thing and they'll vote another one. So is it compulsory in politics is Fiji to vote? Is it a compulsory yes, fine there? yes, it is compulsory. Yep, you'll That's have good, to. that's good. Yep. So I think, I mean, if there is a government, there are people. I don't know why they're not coming forward to do those sort of things now. But running a government, you need money now. You need money and So, things like that. So, Yeah. तो देखा जाए तो If you get a chance, read Professor Rutu's prediction on the poll. Okay, I didn't see. क्या बोल रहा है? If you can highlight us, Shailendra Das कौन सी भैया. बोले हमने नहीं देखा है. We haven't read it. So by the time we'll So read it, अगर it'll be Fiji में over. stability आ जाए, you know, परम तो and then you know there will be lots of things happening. और अभी बतलाया गया है अगर Fiji's international visitor survey में अगर आप देखें ना, so अप्रैल से लेके अगस्त 22 इस साल ना बतलाया गया है कि Fiji has earned in tourism earnings, it has earned about $805 million. Wow. So अगर elections में results भी पलट गया कुछ होएगी, if something bad happens, so God forbid, you know, so अभी तो खाली अब तो जोड़ लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4-5 महीना में Fiji में after COVID Fiji has earned $805 million, bro, from tourists. So in hindsight, you're saying country has done well. Country's done well. I think stability is there at the moment. Okay, Stability सोच के तो आदमी जावे है ना, but you know, Yep, let's see if there's if they win, good luck. If they don't win, yep. victory मांगो अच्छा से ले लो, ना, like Scott Morrison and Like them a have man, done. yeah. Take it on the chest and move. Otherwise, instability अगर Fiji में हो गया, then we go back 10, Yeah, 20 years back, you know. You see, I was there a couple of 2 weeks ago, and you know the mode of that is like everybody's having a good time, everybody's enjoying, everybody's working, everybody's just living a life. और सभी कंट्री में you know this चोर you know डाकू लुटेरे इत्यादि सभी देशेस में तो होते ही रहते हैं. Otherwise the country will not survive. Any country will not survive. So I think it's for me it's like, you know, I have to say something as well. You know, I was in year 2000. I think it was the second coup was in year 2000 and 2002 मेरे 2000? ख्याल से, if I'm not wrong. 2000, no, 2000 I think. ऐसे कुछ रहा कि Second coup. 99, somewhere there. Second or the third coup I was there, and I saw the country was booming and business was all pumping, and it was around December, I remember, something like that. And people were spending money like left, right, center, and it was all happening. And all of a sudden you had bang, there was a coup. So things like that happen in the country. Then we know went what back happens. 15, 20 years. Yeah, year 2000. I think there was another one after year 2000. I'm not sure. My history is bad, so forgive me for that. But nevertheless, we just have to be safe. Yeah. May the best team win. What I'm saying is I'm after reading all these things because हम क्या बोलता है because it also depends on the candidacy ना जन candidates खड़ा हुए. I mean if we have like, you know, of course intelligent and, you know, young vibrant people standing up for elections, at that time people might make their change, you know, you never know, no? Yeah, It's so that's what I'm saying, because of, I'm not saying because of anything, because of the candidates that they have chosen, you know. There's the other one from NGO that has recently gone in. She's a good friend of mine, Jim Johamra Bodin. What's her name? I forgot. So she left Anshu. Was it Anshu? No. She's from Friends organization. Okay. I forgot the name. Anyway, so she's a good woman as well, a good lady as well. So all these people are coming up, and Basundra, she was a school principal, and, you know, all these people are coming up. So they're in the Alliance Party. Yeah, they're teaming up. They're teaming up. Federation Party is teaming Well, up. Things good like on that. them. Good on them. If they can, Good on them. if they So can it bring will something be, good. It will be a real challenge this time. Agar jeet gaye Shashi to, Kiran. Shashi Kiran ji. It's a very, very able lady, and Yep. you know, all this. Well, as you said, if they can take it up on the chin and enjoy the ride from there on for the next elections to come, then it'll be great. It'll be It just would be wonderful. interesting. It'll be interesting and तो wonderful. हम तो बोला कितना दिन में रिजल्ट आवे? Is it one day? I forgot. I think it's the same day, my friend. Same day. Same Abhi to day, na? technology increase hoegi, and I think Fiji is actually catching up on technology. So it'll be a same day result.
December 14th. 100%, तो हमारा बड़ा 100%. भैया का birthday उरोज, so I will definitely not go to the Yeah. birthday. I will sit down Yeah. and watch the results there. Yeah. Well, we should all the participating candidates good luck. जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ से भी जो भी कर रहे हैं, I'm pretty sure they're all looking for to take Fiji to the next level, I suppose. To the next level, definitely. Yeah, and we wish them all good luck. ऐसा कुछ ना हो कि when every time election happens in Fiji, there's कुछ ना कुछ adverse effect है. यार ये election है. And plus it's happening in December. And it's a joyous occasion. People are looking forward. Parties, Christmas, and all those things are just around the corner. Weddings and happenings है Fiji में, bro. कितना खसी, कितना मुर्गी, कितना बत्तख, कितना कट्टे है, आपको bro. बहुत दाम है ये ब्रदर, बहुत दाम है ये. तुम कितना दाम का खरीदा है भाई? हम नहीं. बत्तख is about $35, bro. अच्छा. जिंदा लामांगा तो अभी बेचे $50 के $60 में बेचे जिंदा खड़ू बत्तख. हम देखा जाए, लेडीज लोग आए, उठाए ऐसे करके ले कहाँ जाओ. फिजी में? हाँ. अभी गाउंड sells है. He actually he's got a farm. He breeds them, chicken and ducks. अच्छा, that's right. So he breeds them on the weekdays. And, इसके करे boy. he's got a farm separately, so he breeds them in a farm. Sorry. And he brings them up to sell it in the Gere, and the people come and see. That's his job. That's his bread and butter on the side, and it's a good business. Murgi Battak. Yeah. So yes, once again, all those who are participating, are you going to be voting, or you've changed? You nationalized Australian now. No, हम तो ओजी हो गए. I don't have the rights to. So some of our friends will be voting, and I know they will be voting. Yeah, most of my friends will be voting as well. I'm Fiji Fest के है, there are a lot of them. Okay. So We don't belong to any political party, so we cannot say Exactly. कि vote for this or vote for that. Exactly. I cannot definitely say Yes. that because I'm not there. I will categorically बोले सकता है, I don't belong to any of the parties. Any party Yeah. wins हमारे लिए अच्छा है, right? I will take it on the chest and move from there. But we wish all the parties all the best, all the people who will be voting. हाँ, एक बात और है कि अगर आप if you are talking bad or good about a government, you should have all the I would say strength to go and vote. आदमी ने कभी vote नहीं करे, ये करे करा, वो करे करा, ये करे करा. ऐसे नहीं करी, वैसे नहीं करी से. ऐसे नहीं करी, वैसे नहीं करी. अगर तुम अब उठ के गया नहीं vote करे, so it does not justify that, Yeah. If you want to change the government, if you feel really strong, you need to change. I think 18 and above, no, they can vote now. Yes. There'll be a lot of young voters, my friend, this time. Young voters. So if the young voters are there, they'll be gunning for the young people, I guess. कि एक बात और भी है परम कि देखे चाहिए कि कितना परसेंटेज ऑफ इंडियंस अभी फिजी में बचा है और कितना इंडो फिजियंस बचा है. That would spell something out, कितना जन Do you बचा है think the Fiji is a younger generation? बुढ़े जो है, जो बुजुर्ग है, वो गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, and they're slowly fading away. So I think that's a young generation. It's a young country. Yeah. Well, that's all for the politics. Yeah, have you covered everything, my friend? जो आप पढ़ रहे थे. Oh नहीं, politically yes, it will be a change. अभी ने कहा है, चलो देखते हैं कैसे होता है. और We wish him good luck. परम we were talking about that dude, the Bollywood dude जिसके बारे में हमने कहा था ना, राज किरण के बारे में. Do you have the photos there? I do talked have- about this dude in episode 1 or 2 मेरे ख्याल से, if I'm not wrong. So लोगों को बतला दे कि do you know this man here? गोरा फल आया था ना. What a fella, कितना handsome fella है ना पर time. So his name is, of course, everybody might remember him. Film कर्ज अगर आप देखा है, कर्ज. Yep. Film कर्ज में he was the guy who gets killed by the wife. Now, Param, do you remember that movie? नया वाला कर्ज कि पुराना वाला कर्ज? Purana la. Naya wala is the same as the can't Purana remember. one anyway. Can't So the remember. concept is the same. Yeah. So this dude, इसके बारे में he was a very very promising actor during अभी अगर होते अभी है भी is mysterious. He's disappeared. मरा Yeah. नहीं है, disappeared. He would be 73 this year. I read that. ना Raj Kiran. So इसके mysterious disappearance है वो कहा जाता है. फिल्म कर्ज में ढेर फिल्म में he was acting in his 70s 80s में मेरे ख्याल से. He's very famous, very handsome dude. And however 80s के बाद में उसके जो career था, he tried to slow down and then film offers stopped coming his way. And by the late 90s में कहा जाता है कि राज किरण was out of work and out of the film industry.
because Broke. younger people had taken the box office predictions. So he was out of sight, out of mind. कौन सी अचानक से पर एक रोज गायब हो गया लड़का, Okay. So for 15 years तक he was lost. Hmm. So long story cut short, his family didn't know where he was, but इसके एक family रहा, brother रहा अमेरिका में, you know. So कहा जाता है कि he was driving taxis in America. तो इसके संगे फिल्म में ऋषि कपूर और दीप्ति नवल they acted together in many movies. ना ऋषि कपूर ई फला उन लोग के senior रहा. So they started looking for him after about 10, 12, 15 years. ना बोले लड़का है का, is nowhere to be seen. So good time Facebook नहीं रहा, Instagram नहीं रहा, all these things. They started looking for him here and there, and then पता लगा ऋषि कपूर पता लगा इसके अमेरिका में इसके लड़के इसके एक he's got a brother here. So he rang up ऋषि कपूर इसके रिंग कैरीज बोले कि भैया तुम्हारा ब्रदर कहाँ है, बोले ये अमेरिका में है, बट उसके फोन नंबर कहाँ रहे, बोले पता नहीं. So nobody knew where he was. Last he was seen driving taxis and stuff like that. And so Rishi Kapoor, Deepthi Naval, they started looking for him, and they traveled to America looking for him here and there. And में मिला एक mental asylum में मिला. What? In Mental America? asylum in America, bro. That's sad, पागल खाना. So हाँ, and उसके जो चिन्ह था, जो साइंस था, it developed in India. बोले कि he went to shoot साई बाबा को मारे मांगता रहा. He was scaling the walls of buildings and things. He was going a bit cuckoo here because उसके children और लड़कन जो था, they left him. Okay. Children, not sorry, his wife or kids तो थे, they because of his I think because of his Mental status. no, before that, because of his he was very busy with movies and stuff like that. Because of his busy hectic schedule, I think the wife and the kids, they couldn't take it, and so they left him. And then this bloke, he started going mental, and nobody noticed that. So he ended up in America, taxi chalai se idhar udhar kaam kari se, but then pagal khana mein. So and after that, what happened till today, इसके भी पता नहीं चला कहाँ है, कैसे है. If anybody can उसके Google. जने सोक दे के बेचारा के वेजिटेबल कर दिया होगा ना. Could be, it could be. Guinea pig पता नहीं बना कहाँ लिया है. होगा But तो. anybody here who knows or who has got information about Raj Kiran, ऋषि कपूर बोले हम लोग टाइम फेसबुक नहीं रहा, ही नहीं रहा, नहीं तो हम बहुत पहले खोज लेता. But he was a dude who went around looking for him, bro. It's a big thing, ना. और साथ में दीप्ति नवल भी. So he just disappeared, vanished from the earth, you know. He probably And, doesn't recognize his tears, He probably doesn't recognize all these peers and people and dementia all the बीमार things. दिया इसके, so he wouldn't be Sad, अपने man, खोजे sad. भी. Very sad, bro. There's a reason over So- there. There's a lesson over there. कि life could be taken out of you, no matter how rich or how poor you are. हाँ रिच आप main thing is the अपने जीवन का संतुलित रखना, बैलेंस्ड रखना बहुत जरूरी है ना. बहुत ही जरूरी बात So, है. हम लोग बिना से काम में, म्यूजिक में, कोई चीज में, we tend to spend a bit more time away from these things, taking for granted many things, Someone And is that saying the- he is in a mental asylum. 2022 news है इन्होंने फरमाया there you है. go. अभी भी जना वहीं पर है. Oh my goodness. So, पर हम इसमें एक सीख मिलने को आता है ना. मेंटल, anybody can go mental. हम लोग लाइफ में taken for granted many things like चल देता है. Yeah, For example, yeah. we take our spouses for granted, our children for granted, and our job for granted. अरे कुछ भी करो, ये लोग तो है ये है ना, है ये है. But things have changed ना. So we gotta be equally संतुलित, equally balanced in life, बाहर अगर तुम रहता है घर से, तो घरे भी तुम equal balance करो ना. So something like that happened to his life. He was away from his wife and kids for many hours and days, and बोलत रहा है कि पैसा देता है तो they would be home and things like that. But then the inside love nobody could find, and nobody could see that, बाद में पता लगा अरे हमारा लाइफ ऐसे होगी ना. So he must have gone mentally, and then he ended up in America driving taxis, boo job, and now he's in mental कभी health. थे एक्टर आज होएंगे कहाँ ना. हाँ यार, Once हम लोग loved हार्ट by थ्रो, so हम लोग many छोटा people, रहा, used to yes. look up to this guy, Yeah. And जब वो फिल्म कर्ज में जब सीमी अग्रवाल इसके मार इस मोटर रिवर्स करके ना, हम लोग वो फिल्म देखो, ए हटे काय नहीं काय रास्ता कूदे, and then he Life dies. is too short, and let's not take things for granted. We can never know what's around the around corner. Exactly. Because, I think with these post Pranol, there's a lesson that you've taught us today. Oh, anybody they would watch,
in years to come, this episode, especially 51, that a person, those who know, and most of them who is in the feed here, they all know Raj Kiran. Apart from Rani, and I think Rani is also saying something. You always a pull or twist है Rani बताए. So apart from them, I think everybody knows Raj Kiran, and he was a handsome guy, very handsome guy. Go rhythm, एकदम beautiful गोर smile, उसके he had a बार mustache. उसके सब दिन most of the time he used to play the role Yeah. of I naughty child. I'm घर के बिगड़ा लड़का रही घर के ना. हरदम झापड़ लगे तरह इसके ना. हाँ इसकी फिल्म देखेगा बट बॉय आई मीन as he grew up इसके थोड़ा तोंद भी निकल गया रहा है so people will try to relate to him because he's Yeah. not the normally six pack वाला बंदा नहीं था you know I mean he was very handsome and then Ashwini is saying always do regular check-ins with your loved ones. Yeah. Of course. भूल जाते हैं ना हम लोग कभी भूल छोड़ जाते ये देते सब हैं. चीज देखो ये सब चीज everybody knows to keep life balance to do this but हम लोग we take it for granted this Ashwin ने कहा regular check-ins में करते रहे ना. Yeah. Bro, इस And बात just a पे reminder. I think इस बात पे I think in the future we should do an episode on those people, especially those elder people that come to a country like Australia. It's very important कि उनकी ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं. बहुत सारे न्यूज़ भी मिलते हैं हम लोगों को सुनने के, पर उनकी ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है. I think it's a lesson. We should be talking about that. It's a lesson, but I mean, I wouldn't name names here, but just 2 weeks ago, 1 week ago, there's a Fiji ke banda. I mean, he committed suicide. You know, he Wow. had one of our friends. He just hanged himself, and nobody knew what his problem was. But you know, Wow. he was just हम लोग के age के, you know, and then a few months ago there's a Fiji ला लड़का जो अपन ऊपर बेंजिंग छोड़ के जा रहा है इस पूरा मोटर में ना. So mostly I have noticed, I know अगर कोई डाटा कोई statistically अगर देखे, I would say Param, if people can quote me wrong on this, but I'm seeing कि not ज़्यादातर होत हुई, but you know, because these things they don't get splashed in the media, it becomes a copycat crime, right? You know, suicide जो है they don't get reported so much, and mostly Fiji के बंदा लोग जो 50s के करीब रहे Fiji के लड़का लोग, I must very sadly say, they do these things. I don't know अगर कोई सुना था, if even is an academic or scholar, if you want to do a research on this, कि Fiji Indian background के बंदा लोग ज़्यादातर देखा जाए, they take their own life in Australia. You're coming close to that, my friend. So अभी बच्चा है अभी 30 साल तुम्हारा. घरे डांट लग गया हमें already. Don't you get there to that, you know? So yes, there's a lot of avenues available, ladies and gentlemen. अगर आप सुन रहे हैं, आपके परिवार भी है कहीं पर, रिंग करके चेक आउट कर लो. और if not, help is around here, you know. Don't run around things. Let things run around for you. If you keep running around things, then you know this is what happens. You keep chasing. Keep chasing. तो अभी Raj Kiran जो है, he would be 73 अगर asylum में है, तो he would be a vegetable by now, probably with the, like you said. Young fellas begging in Fiji. Very true. I've seen them. Young fellas लोगों ने यार आजकल भीख मांगे. बोले ये लड़की की फीस नहीं भरे के, रेंट नहीं है भरे के. All this commercial, man. Actually, I was going to write a Facebook post one day. कि please don't ask me money. Please don't ask me. Hello sir, how are you sir? बोल के ना हमें स्टडीज़ में पैसा चाहिए, या चाहिए वो चाहिए. If अगर हाथ पैर आपके चल रहे हैं यार, come on, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं. Go and work, man. हम लोग की जो पेड़ है यहाँ पे, पैसे वाला पेड़, वो थोड़ा सा सुखाई गई भी, मिट्टा चले. Yes, mostly I देखा just जाए don't पर many people are doing 2 jobs now in Australia because I must say Mortgage is big, no? Yeah, mortgage plus I know mortgage rates, interest rate every now and then, but hey, so I have seen many of my friends, I won't name names, they're doing 2 jobs now to cater for all these things, and we can't cut off our life, but we can definitely Yeah. हम लोग देख के दया कर लेता ना, दया कर लेता. And when they see you doing some charity work, or they see you commenting on Facebook and ये lovable person, इसके हम मांगी पैसा इससे ना, कि हमारा लड़कन के खाना खाए कि नहीं है, स्कूल फीस नहीं है, this and that. That's, I don't know what to say on to that, but please do stop. That'll be very important कि आप stop कर दें सब चीज़. I have stopped giving now because it has become a joke. exactly. हमारा पेड़ झुराइए पैसा. पेड़ जुड़ाएंगे ना, बैंक भी जुड़ाएंगे. पेड़ पैसा ला जो पेड़ ऐसे हिला गिरे, नोट लो गिरे सब झुराएंगे यार. People must remember परम कि अगर जितना बड़ा इनकम है
उतना बड़ा मोगच भी है। आई मीन खर्चा भी है। कि बोले आई तो हफ्ता की कमाई 3000, अच्छा राइट, तो फिर उधर मोगच, उधर तुम रूम, काहे उधर अपन तलब बताता यार। हमारी My तुम्हारे बारे में बात करता। सो पर हफ्ता के 3000 कमाए, कहाँ times 4 जाए? divide by 6 कर दो ब्रो। इसको डिवाइड में। But definitely life's a bit of challenge here as well, ladies. Yeah. अगर आप सुन रहे हैं, gents अगर सुन रहे हैं, तो Yep, price yep. of everything, not only in Fiji, in Australia, have gone two-folds, three-folds, even electricity. 400-500 bills आया लगा, हमारे 200 आता है. Next year is gonna three-folds up. वो पैसा कहाँ से आए? From the fixed income, I don't know. 16 लगा बे, 16 16 घरे है, तो 16 है, 16 big 16 लगाओ। 16 नहीं मेटा, अब नहीं मेटा करे, पहले नहीं मेटा मेटा करे। करे। अब नहीं, अब जो रकम से लोग दाम बढ़ाई दी से, so it's It gonna doesn't hit go the back hit. to the grid. हाँ, it doesn't go there. But anyway, anyway, तब तो what I was saying. Okay, so that's about Raj Kiran, ladies and gentlemen. अगर आप नहीं जानते हैं, Sad news. so that's sad news. अगर कोई पता भी लगा ले, अभी he's out of reach. I don't know, उसके family भी, उसके भैया लोग भी, they don't want to talk about him. The wife and the kids, they don't want, they're running away. Yep. So what must have happened, how, where, when, we don't know, but it would be good to see him back in India अगर है. So बोले फ्यूल सर पे बोले, ऑफ कोर्स अभी एक बीच में लोग चटका ही रहा, चीनी लड़का लोग के चपटा दो चीनी, देश $1.60 हो गया, हमला तो बेहाल है। दी हफ्ता बाद देखता $1.80 हो गए, अभी तो $2 में खेले काफी जन कौन चीज? इधर ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल और फ्यूल, हाँ ऑस्ट्रेलिया, फिजी तो डबल है सस्ता ना। फिजी में अब हम भरा नहीं, याद नहीं है हमें। हाँ, it's more than $2 bro, I mean पीपल आई थिंक देखे 20 लाख भर दो, 30 लाख भर दो ना, ये भर दो। सही ना, भर दो तो 20 लाख भर दो, फुल टैंक कर दो तो चल दे। कैसे फुल टैंक है 120 लाख है तो यार $2.40 नहीं यहाँ पे, $2.95 इन फिजी। 295, बाप रे बाप। स्टिल इट्स क्वाइट हेवी ना, Quite हम लोग heavy के यार, हम जो लोग के एक्चुअली में पहले- $2 समथिंग है मैन, सो इट्स इक्विवेलेंट है अगर तुम देखो। हम पहले लोग के में क्या ले $2 हैं? ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी डेज, जब हम नकाशी में रहते रहे ना, तो सो जब संजा के नर्सरी ला बस में उतरो तुम वहाँ पर नकाशी तो रहा, एंड देन हमारे घर बहुत भीतर रहा, उधर नकाशी भीतर रास्ता ना, एंड देन वहाँ से डब्बा ला वैन मेरे ख्याल से व्हाइट वाला तो मैच वन बॉक्स। बेचारा $1 चार्ज करता रहा यार, अभी इतना अभी? खराब लगे। अभी तो दे शुड बी चार्जिंग मोर, नो लोंगर $1, सो वहाँ से उतना भीतर बेचारा ड्राइवर ले जाता खाली $1 में, ड्यूरिंग दोस डेज। सो अभी भी अगर टैक्सी ड्राइवर्स के एरिया लोग कुछ चार्ज करे, आई थिंक क्वाइट रीजनेबल, बिकॉज अरे बात पेट्रोल कौन रखा है यार। Fiji fuel $2.95. Pay rate $2.68. एक चीज पर हम, बट फिजी सरकार द फ्यूल एक्साइज जो रहा, दे डिडंट ब्रिंग इट डाउन, डिड दे? अगर कोई अभी जैसे कि फ्यूल एक्साइज जब अभी कोविड टाइम, डिड दे ब्रिंग इट डाउन लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका? नहीं, ऑस्ट्रेलिया didn't bring it down. नहीं, Australia नहीं, 100% फ्यूल एक्साइज कितना 40 सेंट्स पे लीटर कितना गिराइश रहा फॉर 5-6 मंथ्स, अभी हाँ, जाके बस। उठा है तब 5-6 months नहीं bro, it's only over about a month, barely a month रहा होला। नहीं डॉलर वही तुम $1.60 हम देखा रहा। नहीं 100%, the worldwide rates got up. The Australia made a decision कि fuel excise जो है हम लोग काट देगा, so every liter में से 20 cents लोग काट इस रहा, और सब I forgot the numbers, and then that's why we had low अभी जाएगा, अचानक से चढ़ा है, अभी हम लोग के $2.53 हो गया। फिजी में हम नहीं जानता whether they, because सब countries carries रहा, बोले नहीं करिस ना, दे चार्ज एक्स्ट्रा 20 सेंट्स करे लगा। हाँ तो वेल आई एम सॉरी अबाउट, अगर नहीं करिस फ्यूल ले भी रहा होला extra 20 cents. हाँ तो an able government would have done that, but nevertheless तो वो अभी हटा है, पर तभी हम लोग का प्राइस ऊपर चला गया। अभी तक वी बीन एंजॉयिंग our less than $2 rate, और बताइए सितंबर में खत्म हो जी, so it expired in September. They gave a cushion period, so September end, October में अब जाके they have lifted it, so we are back हम to लोग के तो normal now. GST भी 12% है, we don't be like for the last 22 years it's still on, नहीं sorry, it started off 10% and then it went to 12% GST. काफी रोजे के बड़ा नहीं है, अभी जैसे है GST बड़ा ही देखो क्या है भी। वही तो बात है, so उदुम just for 3 months देखो, हाँ a bit more than 3 months मेरे ख्याल से, but okay I take it for granted, 3 months, see, so it was good help as well,
Yep. That was the Morrison government, and then Labour took over, Ooh. and then after that, भैया हम तो अरे दिनरों बाप के प्राइस चेक करते नहीं है तो आई वुडंट नो इसमें बड़ा बड़ा आदमी पे लोग हम नाइट तो कभी नहीं रहता है. आई डोंट इवन चेक दिनरों प्राइसेस बिकॉज एंड में तो आँखी जब बंद करो सो जाओ तो पता नहीं लगे कहाँ है दिनरों में कि जंगल में. कोई राव हो, बट $800 पे नाइट बिल्कुल नहीं. आई मीन दैट्स वेरी एक्सपेंसिव. दैट वेरी एनीवे एक्सपेंसिव. अब जो अफोर्ड जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करेंगे डेफिनेटली. Nevertheless, Pranol, next week are we going to do the program because the following week you won't be here. Monday की. So नहीं there's कर one पाएगा only इस- one Monday. You won't be. नेक्स्ट वीक शायद नहीं कर पाएगा बिकॉज Okay, so we'll miss. I'll be flying back on a Monday as well. तो उसके बाद में हम लोग करेंगे. So, Okay, so you flying back because on the we Monday. I had planned it that way, but last week Yep, because yep, I'm yep. sick, so everything Yes, is yes. Yep, domino effect हो गया. See. Yes, so do keep an eye on our feeds, ladies and gentlemen. जैसे आता है हम लोग पोस्टर डाल देते हैं और डिटेल्स लेके आ जाते हैं. तो with that, it's time for wrap up. You got a couple of minutes, and I think. और जल्दी से शायरी पढ़ दी यास्मीन जी की. हाँ. उन्होंने बहुत प्यार से बड़े चाव से लिखा है. और यास्मीन जी परम लिखते हैं कि एक मिनट जरा मैं संगीत दूं. You don't want any music. no, give me background music bed जरूरी है. अच्छा ले. यास्मीन जी लिखते हैं कि दोस्ती इम्तिहान नहीं विश्वास मांगती है. दोस्ती इम्तिहान नहीं विश्वास मांगती है दोस्तों. नजर और कुछ नहीं बल्कि दोस्त का दीदार मांगती है. दोस्ती इम्तिहान नहीं विश्वास मांगती है. नजर और कुछ नहीं बल्कि दोस्त का दीदार मांगती है. और आगे लिखती है कि जिंदगी अपने लिए कुछ भी नहीं, जिंदगी अपने लिए कुछ भी नहीं पर दोस्तों के लिए दुआ 1000 मांगती है. क्या बात नाइस. जिंदगी अपने लिए कुछ भी नहीं पर दोस्तों के लिए दुआ 1000 मांगती है. ठोको ताली. Toko tali. And Raina is saying my father won't be home for like 5 days. I'm so sad. Oh. आज हम इसके बताया हम जाता है फिर ये बोले कहाँ जाता कैसे जाता है. I'll be so sad. अरे देखो ना. I just told her today that I'll be away for 4 days. 4 days इसके मिला है ब्रेक. कौन रकम चिलबिन पल करी लड़का. चिलबिल्ला. 5 days इसके बकरी समारक पड़ी. Well, thank you for all those that actually joined us today, and it has been a pleasure always. And जो नए जुड़े थे, जो नए देखे थे. एक बात हम जल्दी से बता दें यार. Sure. If you have a few minutes left. Yeah. फिल्म रिव्यू में आज फिल्म तो नहीं देखना बहुत बिजी रहा बट एक फिल्म के एक फेसबुक पे आई वाज जस्ट नाउ आई गॉट फिल्म बागबान. तो हमारे ढेर सारे दोस्त पुराना famous थे. बागबान पुराना वाला. तो उस पे लिखा थिंग्स यू कैन डू नॉट टू एंड अप पेनीलेस लाइक अमिताभ बच्चन ना. तो बोले कि नंबर 1 है कि डोंट वेट टू सेव फॉर रिटायरमेंट. डोंट वेट अंटिल रिटायरमेंट. पहले से सेव करो. और दूसरा बहुत अच्छा बात हमें लगा है कि कहा जाता है कि डोंट ट्रीट योर किड्स एज फाइनेंशियल एसेट्स. एंड दिस वाज बिग बी's biggest flaw in Bagban. He treated his sons as fixed deposits. Because as the old couple surrendered themselves to their kids, expecting to be looked after. While परम बहुत सही बात है दोस्त लोग अगर सुन रहे हैं कि while it's a child's responsibility to look after their parents in their old age, Param, it is it's not a totally unfair to be completely financially dependent on them. To be dependent on them. Okay. बोले कि ना कर्तव्य बनता है कि बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल करें, लेकिन it will be unfair on the बच्चों to be completely financially dependent on them. This one I will talk more. We will talk more in our next episode. तो अगर आप लोग सुन रहे हैं कि है ना, I mean बच्चों को don't treat them as commodity की fixed deposit. हम तुम्हें पढ़ाए, हम तुम्हें लिखाए, हम तुम्हें ये करा वो करा. Blackmail. आप तो हमें भरो. You know, we don't do that. हम ही करा, मुँह करा, काम sacrifice करा. हम तुम्हारे लिए काम sacrifice कर, जवानी sacrifice कर दिया ना, all this ना. But it will be totally unfair. बच्चों आज के तारीख में I believe आज के तारीख में पहले था तो चल जाता था. पहले दुनिया अलग थी. आजकल तो दुनिया अलग है. तो किसी ने फरमाया कि कलयुग है. I don't know, is it कलयुग at the moment? I don't know. जो बुजुर्ग है, जो जानते पहचानते हैं कि ये कलयुग है और वेद के अनुसार I don't know if it's कलयुग. तो
हम लोग भी डायलॉग बोलते था, कलयुग के जमाना है भैया, तब से लोग बोलते कब तक कलयुग चली ये बात तो हम नहीं जानता है। But it's completely unfair to treat them as to be financially dependent on them. कुछ लोग ऐसे होते पर हम नहीं समझ पाता है। पहले ज़माने के मूवीज लोग जब रहा ना तो they were showing all these things कि बच्चों को अपन जीते जी अपना पैसा उनके नाम पे नहीं करो, घर उनके नाम पे नहीं करो, नहीं तो रास्ता हो जाएगा। Have you seen the film Avatar, राजेश खन्ना की? No, I haven't. It was a bit like बागबान अवतार, देखना पर बहुत सुंदर मूवी है। Avatar बोले, but Avatar जीते जी पैसा लड़के ने कर दिया, and then they put him on the road, you know. So इतना भारी सीख 80s 70s के मूवीज में रहा कि don't do डिपेंड this करते yet. करते आदत तो लोग वैसे ही बीमार पड़ जाए कि लड़का नाइस नहीं, ऐसे लड़कन करते करते बस people don't follow what is in the movies. The movies are always a reflection of the society. Yeah, So अपने ज़माने के लड़का बप्पा मैया पैसा लड़का के नाम पे कर दे, शादी कर ले, लड़का वो हो जाए, and then they regret, which is too late. So it is always advisable, guys, never treat them as commodities, never treat them as a fixed deposit. No, never treat them as fixed deposit. No? अश्विन जी It बोल will रहे be हैं hard. भाई साहब कि कलयुग went into it now last 5,100 years and 432 years बचा है अभी भैया। बाप रे बाप, बाप, उतना तो नहीं जी पाएगा भाई अश्विन। हम लोग आते रहेगा म्यूजिक बजाते रहेगा, जाते रहेगा, चिट के पता नहीं कुछ सेट हो जी। तो आते रहेंगे जाते रहेंगे बाहरे, जाती अनु जी रहेंगी की जल्दी बाहरे। से परम एक बार बता रहे अनु जी, थैंक यू वेरी मच। आपके जो बिटिया के जो फोटोज आप पहले लगाते रहे, आई होप यू कैन डू दैट अगेन। हमें अच्छा लगे, दे क्लेड इन साड़ीज ऑल द टाइम इन पूजा टाइम एंड देन द यू नो टिक्का एंड दे वेरी वेल कल्चरली ओरिएंटेड फैमिली है अनु जी का। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर bestowing। देख के अच्छा लगी फोटोज लगे ना। गुड लक। ग्रेट ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओके आपने अपना कीमती 90 मिनट हमारे साथ आज ज़ाया किया। 90 तो 90 मिनट्स रफली, यस 90 minutes होगी, 90 minutes तक बात करा, बाप रे बाप, that's I'm not only females. And I think it's something Rania. that we enjoy doing, ladies and gentlemen. अपना थोड़ा सा वक्त हम निकाल के आपके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, अलग दुनिया में हम चले जाते हैं, क्योंकि है जो 90 मिनट की दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, और उससे हम बहुत कुछ सीख भी लेते हैं, कुछ सिखा भी जाते हैं, कुछ everything to take home. We take something from the audience as well as we give something to the audience. तो अगर आप ना होते तो हम नहीं होते, अगर हम नहीं होते तो आप नहीं होते। एक कड़ी उम्मीद करता है कि बनी रहे, और ये जो हमारे जो संगठन है बनी और बढ़ती रहे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रणोल जी, आपका जो टूर है उम्मीद करता है कि दूधो ना हो फूलो फलो, एंड इट बिकम्स दूध के नहा लेना और बनवासी नहीं करना, सही सलामत एकदम घरे आ जाना। Stay away from all the blue and the white goalies, just take an Panadol. And all the best. Come home safe, my friend. All the best and good luck. Thank you, ladies and gentlemen. It's been a pleasure. Episode 51 मिलते हैं episode 52 में। तब तक के लिए हम लोगों को आज्ञा दीजिए, और हम हमेशा ये स्क्रीन लाते हैं और बोलते हैं कि thank you for watching from PNP. All the best. स्वागत तो करो हमारा। PGTV Australia presents हो सुनिए चिट चैट मसाला शो, परम और प्रणोल के संग, परम और प्रणोल के संग। We welcome you to the show today.